देवियों और सज्जनों, वेलकम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सितारों की ओर नहीं बल्कि हमारी धरती के सबसे रहस्यमय और करीब के स्थान की ओर है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से की जो इतना गहरा है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसमें रख दें तो उसकी छोटी भी 1 किलोमीटर से ज्यादा पानी के नीचे डूबी रहेगी। यह अद्भुत और विस्मयकारी जगह है मारियाना ट्रेंच। यह हमारे महासागरों का सबसे गहरा झात भाग है, जहां जबरदस्त दबाव, घना अंधकार और हड्डियां जमा देने वाली ठंड है। इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम बस समझना शुरू ही कर पाए हैं। यह हमारी अपनी धरती का अंतिम सीमांत है। तो आपके मन में पहला सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर यह ट्रेंच है क्या? इसे आप प्रशांत महासागर की तलहटी पर बनी एक विशाल अर्धचंद्राकार दरार की तरह सोच सकते हैं। यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि एक जटिल भूवैज्ञानिक संरचना है, एक सबडक्शन जोन, जहां पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स में से एक पैसिफिक प्लेट दूसरी छोटी मारियाना प्लेट के नीचे धीरे धीरे धंस रही है। यह धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया करोड़ों वर्षों से चल रही है और इसी ने पृथ्वी की सबसे गहरी घाटी को तराशा है। यह वह स्थान है जहां सतह पर हमारे जाने पहचाने नियम लागू नहीं होते, एक अलग ही दुनिया जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। यह गर्त मानव अन्वेषण और वैज्ञानिक समझ के लिए अंतिम चुनौती है। सदियों तक हम आसमान की ओर देखते रहे, लेकिन हमारे पैरों के नीचे भी एक ऐसी ही अनजानी एलियन दुनिया छुपी है। मारियाना ट्रेंच प्रकृति की विशाल शक्ति और जीवन की अद्भुत विविधता का प्रमाण है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकती है। यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है जो हमें हमारे ग्रह की उत्पत्ति, जीवन की शुरुआत और यहां तक कि अन्य ग्रहों पर भी चरम परिस्थितियों में जीवन की संभावना के सुराग देती है। इस ज्ञान यात्रा में हम इस अद्भुत जगह के कई पहलुओं को जानेंगे, इसकी सटीक स्थिति, इसकी गहराई को परिभाषित करने वाले हैरान कर देने वाले आंकड़े और उन अनोखे जीवों से मिलेंगे जो इस अंधेरी दुनिया में रहते हैं। हम यह भी देखेंगे कि इंसानों ने इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए कितने साहसी प्रयास किए और किन किन तकनीकी चुनौतियों का सामना किया। तो अपनी जिज्ञासा को तैयार रखिए, क्योंकि मारियाना ट्रेंच की कहानी खोज, जिजीविषा और मानव जिज्ञासा की कभी न खत्म होने वाली भावना की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर इस विशाल नीले ग्रह पर हम इस अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार को कहां पाएं? सही जवाब के लिए हमें पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर जाना होगा। मारियाना ट्रेंच मारियाना द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है और इन्हीं द्वीपों से इसका नाम लिया गया है। ये 15 ज्वालामुखीय द्वीप, जिनमें गुआम भी शामिल है, एक छाप जैसी श्रृंखला बनाते हैं। खुद ट्रेंच लगभग 2550 किलोमीटर तक फैली है, जो ग्रैंड कैनियन की लंबाई से 5 गुना से भी ज्यादा है। यह एक विशाल संरचना है, लेकिन इसकी औसत चौड़ाई केवल 69 किलोमीटर के आसपास है। यानी यह धरती की सतह में छुपा एक बेहद संकरा लेकिन असाधारण रूप से गहरा दरार है। मारियाना ट्रेंच का निर्माण भूवैज्ञानिक शक्तियों की एक शानदार कहानी है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। हमारी धरती की सतह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, यह कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी है जो लगातार हिलती रहती हैं। इस खास क्षेत्र में विशाल पैसिफिक प्लेट पश्चिम की ओर बढ़ रही है और अपेक्षाकृत छोटी मारियाना प्लेट से टकरा रही है। पैसिफिक प्लेट पुरानी, ठंडी और घनी होने के कारण वह मुड़कर हल्की मारियाना प्लेट के नीचे पृथ्वी के मेंटल में धंसती जाती है। यह धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला प्रक्रिया ही इस गहरे ट्रेंच को बनाती है, जैसा कि हम आज देखते हैं। यह भूवैज्ञानिक नाटक लाखों करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। पैसिफिक प्लेट की लगातार घिसाई और धंसना न केवल ट्रेंच को और गहरा करता है, बल्कि इस क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। यही वजह है कि मारियाना द्वीप समूह, जो ट्रेंच के समानांतर चलता है, ज्वालामुखीय मूल का है। ये द्वीप दरअसल उसी धंसती प्लेट के पिघलने से बने हैं, जिसमें से पिघला हुआ पत्थर ऊपर आकर द्वीपों का निर्माण करता है। तो ट्रेंच और द्वीप, ये दोनों एक ही अद्भुत भूवैज्ञानिक सिक्के के दो पहलू हैं, एक गतिशील निर्माण और विनाश की प्रणाली।
इस प्रक्रिया को समझना हमें यह एहसास दिलाता है कि धरती एक जीवित, सांस लेती हुई दुनिया है। यह कोई स्थिर चट्टान नहीं, बल्कि निरंतर बदलती, विशाल शक्तियों वाली जगह है, जो अपनी सतह को ऐसे आकार देती है जैसा हम शायद ही समझ पाते हैं। मारियाना ट्रेंच सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति की एक ताकतवर याद दिलाती है। यहां हमारी दुनिया की नींव लगातार रिसाइकल हो रही है, एक प्रक्रिया जो पृथ्वी की भूगोल के लिए बेहद जरूरी है। यही निरंतर गति और बदलाव हमारी धरती को इतना अनोखा और आकर्षक बनाते हैं। अब वह सवाल जो शायद हर किसी के मन में है, आखिर मारियाना ट्रेंच कितनी गहरी है? इसके आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं और समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा, जो दक्षिणी छोर पर एक छोटी सी घाटी है, उसे चैलेंजर डीप कहा जाता है और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर तक पहुंचती है। यह लगभग 7 मील सीधा नीचे है। अगर तुलना करें तो व्यावसायिक हवाई जहाज लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, यानी ट्रेंच की गहराई लगभग एक जेटलाइनर की क्रूजिंग ऊंचाई के बराबर है। एक और तुलना से समझें, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। आपको उसे 13 बार एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, तब जाकर ट्रेंच की गहराई छू पाएंगे। इस गहराई पर दबाव भी उतना ही चौंकाने वाला है। सतह पर हम एक एटमॉस्फेयर का दबाव महसूस करते हैं, लेकिन चैलेंजर डीप के तल पर दबाव 1000 गुना ज्यादा है। यह ऐसा है जैसे 50 जंबो जेट एक इंसान के ऊपर रख दिए जाए। ट्रेंच की गहराई की पहली माप 1875 में ब्रिटिश सर्वे जहाज HMS चैलेंजर ने ली थी और इसी के नाम पर चैलेंजर डीप का नाम रखा गया। उन्होंने साधारण वेटेड साउंडिंग रोप से 8000 मीटर से ज्यादा गहराई दर्ज की थी। उस समय के लिए यह अविश्वसनीय खोज थी। आज हम कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक शोधपोत मल्टी बीम इको साउंडर इस्तेमाल करते हैं, जो साउंड वेव्स का एक पंखा समुद्र तल की ओर भेजते हैं और उनसे टकराकर लौटने में जितना वक्त लगता है, उसे मापकर वैज्ञानिक महासागर की सतह का बेहद विस्तृत 3D नक्शा बना सकते हैं। इन उन्नत तकनीकों की मदद से हम ट्रेंच की जटिल भूगोल, उसकी रिज, घाटियां और कीचड़ के ज्वालामुखी का अभूतपूर्व सटीकता से नक्शा बना पाए हैं। फिर भी हमारी सबसे अच्छी तकनीक के बावजूद इसकी सटीक गहराई मापना अब भी एक चुनौती है। पानी में ध्वनि की गति तापमान, दबाव और लवणता के हिसाब से बदलती रहती है, जिन्हें सटीक माप के लिए ध्यान में रखना पड़ता है। यही वजह है कि अलग अलग सर्वेक्षणों में आंकड़े थोड़ा बहुत अलग आते हैं, लेकिन सभी इस अद्भुत सच की पुष्टि करते हैं। मारियाना ट्रेंच निस्संदेह हमारी धरती का सबसे गहरा गर्त है। मारियाना ट्रेंच के विशाल विस्तार में एक खास जगह है, जिसे धरती की सतह का सबसे गहरा बिंदु होने का गौरव प्राप्त है। यह जगह, जैसा कि हमने पहले भी बताया, चैलेंजर डीप कहलाती है। यह कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, बल्कि ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर बसा एक छोटा स्लॉट के आकार का बेसिन है। इसे आप दुनिया की सबसे गहरी घाटी के सबसे गहरे हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। इसकी खोज और इसकी गहराई को सटीकता से मापने की लगातार कोशिशें समुद्री अनुसंधान का शिखर हैं। इसका नाम HMS चैलेंजर पोत के नाम पर रखा गया, जिसकी टीम ने पहली बार इस अथाह गहराई को मापने का प्रयास किया था। चैलेंजर डीप नाम ही अपने आप में साहस और रोमांच का एहसास कराता है, मानो प्रकृति ने मानव कौशल को चुनौती दी हो। इस बिंदु तक पहुंचना इंजीनियरिंग और साहस का अद्भुत नमूना है। यहाँ का माहौल चांद की सतह से भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण और अजनबी है। यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं पहुंचती, पानी का तापमान जमाव बिंदु के करीब होता है और दबाव इतना ज्यादा है कि ज्यादातर सैन्य पनडुब्बियां भी यहाँ एल्यूमिनियम के डिब्बे की तरह चकनाचूर हो जाए। इंसानों या रोबोटिक यानों को इतनी गहराई तक भेजना ऐसी तकनीक की मांग करता है जो इन बेहद कठिन परिस्थितियों को झेल सके। यह हमारी अनवरत खोजी भावना का प्रमाण है। सालों में चैलेंजर डीप में इंसानों की यात्रा गिनी चुनी ही हुई है। पहली मानव यात्रा 1960 में हुई थी, एक ऐतिहासिक सफर जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। उसके बाद दशकों तक यह गर्त इंसानों से अछूता रहा।
केवल मानव रहित रोबोटिक यानों ने यहां दस्तक दी। फिर 2012 में मशहूर फिल्म निर्देशक और खोजकर्ता जेम्स कैमरन ने एकल यात्रा की। उसके बाद कुछ और खोजकर्ता और वैज्ञानिक यहां पहुंचे और हर यात्रा ने इस चरम वातावरण और यहां पनपने वाले जीवन को समझने के लिए एक नई कड़ी जोड़ी। दिलचस्प बात यह है कि विस्तृत मैपिंग से पता चला है कि चैलेंजर डीप कोई एक्समान बेसिन नहीं है। असल में यह 3 अलग अलग पूल्स से बना है, जिन्हें अनौपचारिक रूप से वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पूल कहा जाता है। इस समय ईस्टर्न पूल को सबसे गहरा माना जाता है। हर नया सर्वेक्षण और हर नई डाइव हमारी जानकारी को और सटीक बनाता है और धरती के सबसे निचले बिंदु की खोज को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। चैलेंजर डीप अब भी अज्ञात का एक ताकतवर प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि 21वीं सदी में भी हमारी अपनी धरती में गहरे, अनसुलझे रहस्य छुपे हैं, जो अभी खोजे जाने बाकी हैं। One of the most fascinating questions about the Mariana Trench is, can anything possibly live in such an extreme environment? For a long time, scientists believed that the deep ocean, especially the Hadal zone, which is basically depths below 6,000 meters, was a lifeless desert due to the crushing pressure, freezing cold, and total absence of light. However, explorations have revealed the complete opposite. The trench is actually teeming with life. Organisms that have evolved incredible adaptations to not just survive, but really thrive in conditions that would be instantly fatal to surface dwellers. This discovery has, completely changed our understanding of biology. So, what kind of creatures actually call this abyss home? You won't find fish with skeletons like the ones we know, as the immense pressure would just crush their bones. Instead, you find unique animals like the Mariana snailfish. This small, translucent, tadpole-like fish is the undisputed king of the deep. It has a soft, gelatinous body and a flexible skull, allowing it to withstand pressures that are honestly hard to even imagine. Another common inhabitant is a type of crustacean called an amphipod. These shrimp-like creatures are surprisingly large, growing to many times the size of their shallow water relatives, a phenomenon known as gigantism. The base of the food web in this dark world is not sunlight, but something called chemosynthesis. In the absence of photosynthesis, some microbes have evolved to create energy from chemical reactions, using substances like methane or sulfur that seep from the ocean floor. These microbes form the foundation of the entire ecosystem. Other creatures, known as detritivores, survive by feeding on marine snow, which is basically a continuous shower of organic material, like dead plankton and fish, that drifts down from the upper layers of the ocean. It's a world that runs on the leftovers from the world of light above. The discovery of this vibrant ecosystem has profound implications. It shows us that life is incredibly resilient and adaptable, capable of finding a way in the most inhospitable corners of our planet. It also gives scientists hope for finding life elsewhere in the solar system. If life can exist without sunlight in the crushing blackness of the Mariana Trench, perhaps it could also exist in the subsurface oceans of moons like Europa or Enceladus. The strange and wonderful creatures of the trench are not just biological curiosities. They are a source of inspiration and a window into the possibilities of life itself. The story of exploring the Mariana Trench is a story of human courage and technological innovation. For a place so close, it is in many ways more difficult to reach than outer space. The first ever manned mission to the bottom of the Challenger Deep was a truly historic event. On January 23, 1960, two brave men, Swiss oceanographer Jacques Piccard and US Navy Lieutenant Don Walsh, climbed into a bathyscaphe named Trieste. A bathyscaphe is essentially an underwater balloon using a large float filled with gasoline for buoyancy and a small, incredibly strong steel sphere for the crew. Their descent into the blackness took nearly 5 hours. As they went deeper, the world outside their tiny viewport disappeared into absolute darkness. They were venturing into a realm no human had ever seen. When they finally touched down on the soft, silty seabed, they had reached the lowest point on Earth.
They stayed for only about 20 minutes, but in that short time, they made a monumental observation. They saw a flatfish, something similar to a sole or flounder, swimming away from their craft. This proved, once and for all, that complex life could exist even at this extreme depth. After this incredible achievement, it would be more than half a century before another human returned to the bottom. The technological challenges were simply too great. Then, in 2012, filmmaker and explorer James Cameron, famous for movies like Titanic and Avatar, made a solo descent in a privately funded submersible called the Deep Sea Challenger. His vessel was a marvel of modern engineering, designed to descend much faster than the Trieste and equipped with high-definition 3D cameras and a robotic arm for collecting samples, ushering in a new era of deep-sea exploration. Since Cameron's dive, there has been a renewed interest in exploring the Challenger deep. A handful of other explorers, including American investor Victor Vescovo, have made multiple dives as part of the Five Deeps expedition, which aim to reach the deepest point of all 5 of the world's oceans. These recent missions have used even more advanced submersibles, capable of making repeated trips to the Hadal Zone. Each dive brings back new data, new samples, and new images, slowly peeling back the layers of mystery that have shrouded the Mariana Trench for so long. Why has the deepest part of our own planet been visited by fewer people than have walked on the moon? The answer lies in a set of extreme physical challenges, the greatest of which is the colossal, crushing pressure. At the bottom of the Challenger Deep, the water pressure exceeds 1,000 atmospheres. This is over 16,000 pounds per square inch. To put it simply, this pressure would destroy almost any machine or vessel, not specifically designed to withstand it. Building a submersible with a crew compartment that won't implode requires incredibly strong materials, like thick titanium alloys and precision engineering. The second major challenge is the complete and utter darkness. Sunlight cannot penetrate these depths, so beyond about 1,000 meters, the ocean is in a state of perpetual night. Explorers are entirely dependent on the powerful external lights of their submersible. This makes navigation difficult and limits the field of view to whatever is illuminated by the craft's beams. It is like exploring a vast, unknown landscape at night with only a small flashlight. You can only see a tiny piece of the world around you at any given moment, making it hard to get a sense of the larger environment. Then, there is the extreme cold. The water temperature in the Mariana Trench is just a few degrees above freezing, typically between 1 to 4 degrees Celsius. This bitter cold poses a significant threat to the electronic systems and batteries of the submersible, which must be designed to operate reliably in these near-freezing conditions. The cold also presents a challenge for life support systems inside the crewed sphere. Any journey to the bottom and back takes many hours, and maintaining a safe and stable temperature for the occupants throughout the mission is absolutely critical for their survival. Finally, there is the simple problem of distance and communication. The trench is in a remote part of the Pacific Ocean, and getting the support ships and equipment there is a major logistical operation. Once the submersible is in the water, communication becomes a problem. Radio waves do not travel through water, so communication with the surface ship relies on underwater acoustic modems, which transmit data as sound waves. This technology is slow and has a very low bandwidth compared to the radio communication we use on the surface, making real-time control of robotic arms or transmission of high-quality video extremely difficult. So, after learning about its depth, its creatures, and the challenges of exploring it, we must ask the final, most important question. Why does the Mariana Trench matter? Why should we spend so much effort and resources to study a place so remote and inhospitable? The answer is that the trench is a treasure trove of scientific knowledge that can teach us about our planet, our history, and our future. It is a unique window into the fundamental processes that govern our world, from geology to biology. From a geological perspective, the trench is the best place on Earth to study the process of subduction. This is where the Earth's crust is recycled back into the mantle, a key part of the plate tectonics that shape our continents and oceans.
By studying the rocks, sediments, and seismic activity in the trench, scientists can better understand earthquakes, tsunamis, and volcanic activity. The unique mud volcanoes found in the trench also release elements and fluids from deep within the Earth's crust, providing direct clues about the planet's interior composition that we can't get anywhere else. Biologically, the trench is a gold mine. The creatures that live here, known as extremophiles, have unique genetic and biochemical adaptations that allow them to survive the crushing pressure and cold. Studying these adaptations could lead to breakthroughs in medicine and biotechnology. For example, enzymes that function under high pressure could be used in industrial processes, and the unique biological compounds produced by these organisms could lead to new drugs and treatments. It also helps us understand the absolute limits of life and the conditions under which it might arise on other worlds. Unfortunately, even this most remote place on Earth has not escaped the impact of humanity. Recent expeditions have found plastic pollution, including plastic bags and candy wrappers, at the very bottom of the Challenger Deep. They have also found microplastics inside the bodies of the deep-sea amphipods. This is a shocking and powerful lesson. It tells us that our actions on the surface have far-reaching consequences, affecting every single part of our planet, no matter how distant. It is a stark reminder of our responsibility to protect the entire global ocean, not just the parts we can easily see. Devion R. Sajano, our journey to the deepest part of the Earth, the Mariana Trench, comes to an end. We have seen that it is more than just a deep spot in the ocean. It is a world of extremes, a place of immense geological power, and a sanctuary for some of the most bizarre and resilient life forms on our planet. It is a place that challenges our technology, pushes the limits of human endurance, and expands our understanding of what is possible. The trench is a symbol of the great mysteries that our own world still holds. The exploration of this final frontier teaches us a profound lesson about curiosity. It is the human spirit, the innate desire to know what lies beyond the horizon, or in this case, beneath the waves, that drives us to build incredible machines and venture into the unknown. Every sample collected, every image captured, and every species discovered adds a new chapter to the story of our planet. It reminds us that there is always more to learn, and that the process of discovery is a journey without a final destination. The more we learn, the more we realize how much we still don't know. The Mariana Trench also serves as a critical barometer for the health of our planet. The discovery of pollution in this pristine and remote wilderness is a wake-up call for all of humanity. It proves that our planet is an interconnected system, and the trash we discard on land can find its way to the most inaccessible corner of the world. It underscores the urgent need for us to be better stewards of our planet, to protect its oceans, and to preserve its wonders for future generations to study and admire. So, as we conclude, let us carry with us the sense of wonder and respect that the Mariana Trench inspires. Let us continue to ask questions, to seek answers, and to explore the hidden corners of our world. Because in understanding the deepest, darkest secrets of our planet, we ultimately learn more about ourselves and our own place in the universe. The quest for knowledge is what defines us, and places like the Mariana Trench ensure that this magnificent quest will continue for a long, long time. Thank you.